A cyclone is not about the event, it is about the aftermath. It is about the fact it takes away the lives of people and the livelihoods of people. It takes away the development dividend. अगले 6 महीने के लिए इतनी बड़ी लेबर गांव के अंदर आके पहुंच गई। उस लेबर के पास अभी करने को कुछ नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है गांव के अंदर, इमीडिएटली जाते ही तो काम मिल नहीं जाएगा। सो मैंने कहा है कि क्यों नहीं मनरेगा को हम क्लाइमेट चेंज से लिंक कर दें। I believe it is a highly corrupt system that we have of EIA today. Whether it was UPA or NDA, the track record is no different on the clearance. And the person who was in the chair, Jairam Ramesh, cleared maximum projects when he was the environment minister. So please don't give me this, that nahi, NDA, UPA, sab karte hain, wo hi karte hain. Hello, good evening, नमस्ते। फेसबुक के इस विशेष इंटरेक्शन में आप सबका स्वागत है। आज 5 जून है और 5 जून पूरे देश में, पूरी दुनिया में एनवायरमेंटल दिवस के रूप में मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस के रूप में। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम अब हर वीक, हर हफ्ते वेडनेसडे वाला नहीं कर रहे हैं। सिर्फ किसी स्पेशल दिन, कोई स्पेशल ओकेजन होगा तब शाम के वक्त हम फेसबुक करेंगे, और उसके अलावा सैटरडे संडे को। तो आज फ्राइडे है, लेकिन आज बहुत विशेष दिन है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। थोड़े ही देर में हमारे साथ ज्वाइन करने वाली हैं सुनीता नारायण जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। बातचीत करेंगे 2 लोग, मैं आपके साथ रहूंगा, और हमारे साथ हैं प्रोफेसर मधुलिका बैनर्जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और पर्यावरण पढ़ाती हैं, पर्यावरण पे किताब लिखी है। सो हमने सोचा कि सुनीता जी से बात 2 लोग करें जिन्हें मैं तो बहुत जनरल सी बात कर सकता हूँ, लेकिन प्रोफेसर मधुलिका बैनर्जी का अपना इंटरेस्ट है, अपना स्पेशलाइजेशन है, तो मुझे लगा कि सुनीता जी से बात करने के लिए 2 लोग मिलकर बात करें तो वो बेहतर होगा। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, जब हम वेट कर रहे हैं सुनीता नारायण जी के आने का। जो मैं सामान्यतः करता हूँ इस फेसबुक लाइव में, हर बार बताते हैं कि अभी क्या स्थिति है, और जैसा हम देख रहे हैं कि अभी कोविड के जो केसेस हैं, कोरोना वायरस के केसेस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, और अब हम लगभग 10,000 केसेस पर डे के हिसाब से ऐड कर रहे हैं। दिल्ली जैसे जगहों पे स्थिति काफी नाजुक होती जा रही है, काफी गंभीर होती जा रही है। उस सब के बारे में चर्चा करेंगे, शायद हम कल परसों अपने सामान्य फेसबुक लाइव में करेंगे। लेकिन आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, और इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को मार्क करने के लिए हमारे साथियों ने, जो यूथ फॉर स्वराज के साथी हैं, उनको मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत ही अनयूजुअल तरीके से किया। आमतौर पे हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं तो कोई एक इवेंट करते हैं, बाहर कुछ मिलते हैं, कोई सेमिनार करते हैं। इस वक्त तो कोविड के चलते कुछ हो नहीं सकता। So what they decided, Youth for Swaraj decided that from 9 in the morning till 9 in the evening, सुबह 9 से रात 9 बजे तक वो लगातार इसके ऊपर फेसबुक इंटरेक्शंस करेंगे। और कितने रेंज के लोगों के साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया है, उनमें से कुछ मैं आपको बताऊं जो सुबह 9 बजे से इन साथियों ने किया है। शुरू में इन्होंने कहा, डू वी नीड ए लॉकडाउन टू हील आवर एनवायरनमेंट। वहां से इन्होंने आपसी बातचीत शुरू की सुबह 9 बजे। उसके बाद पेंडेमिक से इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन जो हुआ है उसके बारे में, अरुणाचल की दिबांग वैली में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में एक फेसबुक लाइव किया। फिर उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक फेसबुक लाइव था, जिसमें हिमांशु ठक्कर जी, प्रकाश जी, हिमांशी जी सब कुछ शामिल हुए। फिर बातचीत की आशीष कोठारी और असीम श्रीवास्तव के साथ। कपिल भाई ने बातचीत की। ये देश के लीडिंग एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जो कि इकोलॉजी के बारे में सोचते हैं। आपसे भी उन्होंने बात की। बायोडाइवर्सिटी को जो थ्रेट है उसके बारे में चुक्की नंजुंडा स्वामी और अर्जुन बसुरे से बात की। और इस बातचीत को चलाते हुए, जहां आपने वाइजैक गैस लीक के बारे में भी बात की थी, और ड्राफ्ट EAI नोटिफिकेशन, जिसके बारे में श्रीपद धर्माधिकारी और जमन अली से भी बात की थी, उन सब को लेते हुए पिछला सेशन जो हुआ था उसमें हमारे साथी अवीक साहा जी ने बातचीत की मेधा पाटकर, रवि चोपड़ा और प्रशांत भूषण से। तो एक पूरे दिन में तमाम तरह की बातचीत ऐसे लोगों से जो कि
बात कर सकते हैं जो कि हमें गंभीर रूप से गाइड कर सकते हैं। और हमने सोचा कि आज की इस सारी बातचीत का कंक्लूजन यूथ फॉर स्वराज के साथियों ने सोचा कि वो करेंगे एक एजेंडा क्या होना चाहिए, और उस पर बातचीत के लिए हमारे साथ रहेंगी सुनीता नारायण जी। वो ज्वाइन करें उससे पहले मैं आग्रह करूंगा मधुलिका बनर्जी से कि आप वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को लोग तरह तरह से मनाते हैं। एक तो बिल्कुल एक ग्रीन एक्टिविटी जिसमें स्कूल कॉलेज कोई एक अच्छी सी एनवायरमेंटल एक्टिविटी कर देते हैं, लेकिन ये यूथ फॉर स्वराज के साथ ही इसको एक पॉलिटिकल अप्रोच से देख रहे हैं। ये एनवायरमेंट की पॉलिटिक्स क्या है, इसे आप क्यों देखती हैं? और आपने इसके बारे में लिखा, आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी पे भी रिसर्च की थी, उसके बाद देश की जो मेडिकल पॉलिसीज है, हेल्थ पॉलिसीज हैं, टेक्नोलॉजिकल चॉइसेस हैं, और इससे जुड़ा हुआ नॉलेज का जो सवाल है, इस पे रिसर्च की है। तो आपसे मैं कहूंगा कि शुरुआत इससे करें कि ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को एक पॉलिटिकल नजर से देखने का मतलब क्या होगा? शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। इस विषय पर हम लोग काफ़ी समय से सोच रहे हैं। जैसे आपने कहा, पॉलिटिकल नज़रिए से अगर देखना है तो हमें कम से कम दो चीज़ें देखनी है। पहली बात यह है कि एक व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ सवाल है पर्यावरण। पर्यावरण केवल पेड़ बचाना, पानी साफ करना इत्यादि नहीं है। वो हैं, वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन जब हम उनको व्यवस्था के नज़रिए से देखते हैं, तब पर्यावरण के सवाल जो है वो हमारे बहुत करीब हो जाते हैं। कहीं दूर खड़ा कोई अरण्य है, उसको हमें बचाना है, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं और उसके साथ वो जुड़ा हुआ है। और व्यवस्था का मतलब ये है कि जिस व्यवस्था में हम लोग रहते हैं, उसमें उस उत्पादन व्यवस्था है, उसमें हम लोगों की उपभोक्ता का व्यवस्था है। So there is a question of production, there is a question of consumption, and these things are related to the question of the environment. तो हमें ये बात समझनी है कि जिस व्यवस्था में हम रहते हैं और उस व्यवस्था के दौरान जिन सब चीज़ों का हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, व्यवस्था समझती है कि उनका उत्पादन होना चाहिए, वो अनिवार्य है, ज़रूरी है। हर एक चीज़ को अगर हम दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक अगर हम अपने आप से पूछें कि जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से उत्पादन होकर आती है और हम किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं, रिसाइकिल करते हैं, यानी वेस्ट को हम कैसे डील करते हैं। दिक्कत ये है कि बहुत समय से ये बात जो पॉलिटिकल है, इस चीज़ को पॉलिटिकल समझने में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल मूवमेंट्स इस चीज़ को समझ नहीं पाए, ऐसा मेरी समझ है। और इसमें किस तरह से पॉलिटिकल काम किया जा सकता है, और अगर यूथ फॉर स्वराज कर रहा है, शुक्रिया यूथ फॉर स्वराज मुझे बुलाने के लिए। इस पर बहुत ज़रूरी काम युवा कर सकते हैं, इसमें उस पर होपफुली हम चर्चा करेंगे। और सुनीता नारायण जी जो आएंगी हमारे साथ, जुड़ेंगी अभी, हम सब के, सुनीता जी के और हमारे गुरु जो थे अनिल अग्रवाल, जो संस्थापक थे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जहां पर सुनीता जी अभी डायरेक्टर हैं। अनिल जी से हमने जो सीखा, अनिल भाई से हमने जो सीखा था, वो यही था, वो हमेशा कहते थे कि युवा इस सवाल पर जब खड़ा हो जाएगा, उस पर जब काम करेंगे, तब जाके पर्यावरण पर असली राजनीति का सवाल बनेगा, और ये बहुत जरूरत है इस चीज की। तो उन्होंने जो काम किया वो ये था कि इस पर जो इतना विशाल मतलब कलेक्शन है, इंफॉर्मेशन, एनालिसिस, विश्लेषण इस पर, पर्यावरण पर बहुत कुछ है, लेकिन वो एक एकेडमिक से कॉन्टेक्स्ट में रह जाता है। इसलिए उन्होंने सोचा था कि डाउन टू अर्थ जैसा मैगजीन शुरू करना चाहिए, क्योंकि लोग पढ़ें, समझें और उसको अपने रोजमर्रा की जिंदगी और राजनीति में उतार सकें। ये पर्यावरण का मतलब जब होगा, तब वो हमारे लिए राजनीति का विषय बन सकता है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिंक। या बहुत बढ़िया। जब आप बात कर रही थी, इसी बीच सुनीता जी हमारे साथ जुड़ भी गई हैं। वेलकम सुनीता जी। इट्स सो हैपेंड दैट आप जिस मोमेंट पे आपने एंटर किया, उस मोमेंट पे मधुलिका अनिल भाई के बारे में मैं सुन रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मधुलिका। बहुत यादें दिल में आई, तो बहुत अच्छा लगा।
सुनीता जी देखिए, आज हमारे साथियों ने क्या किया, आई मस्ट से मेरा इनिशिएटिव नहीं है, ये हमारे यंग साथियों का इनिशिएटिव है। हमारा यूथ फॉर स्वराज करके जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन साथियों ने कहा कि आज एनवायरनमेंट डे पे वो सुबह 9 बजे से लेके रात 9 बजे तक, 8:30-9 बजे तक वो सिर्फ एनवायरनमेंट के सवाल पे बिल्कुल एक फेसबुक लाइव सेशंस का सीरीज करेंगे। और आपके पास वो पोस्टर आया होगा, तमाम लोगों से उन्होंने बात की है। उसके इमीडिएट, चाहे वो ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का नोटिफिकेशन जो आया है उस जैसे स्पेसिफिक सवाल, या दिबांग वैली में जो हो रहा है उससे लेके डेवलपमेंट की डेफिनेशन पे आशीष कोठारी और तमाम लोगों से बातचीत करना, तो हर रेंज पे। और फिर एक्टिविस्ट, अभी हमारे से जस्ट पहले वाले सेशन में मेधा पाटकर थी, उसमें रवि चोपड़ा थे, प्रशांत भूषण थे, तो सब लोगों से बात की है। बहुत अच्छा। एंड वी थॉट वील कंक्लूड दिस एंटायर थिंग विद अ कन्वर्सेशन विद यू. So it's not the three of us talking, you are talking and the two of us are asking. ये नहीं चलेगा योगेंद्र, ये नहीं चलेगा। हम सब साथी हैं, हम सब इन चीजों से जूझ रहे हैं और सब कुछ देख रहे हैं, तो ये तो कॉन्वर्सेशन रहेगी, ये इंटरव्यू नहीं है। इसमें मैं इसलिए कहता हूँ कि क्या होता है कि जो पब्लिक लाइफ में आ जाते हैं उनको फिर गलतफहमी हो जाती है कि इस देश में पॉलिटिशियन को, जज को और जर्नलिस्ट को, तीनों को गलतफहमी होती है कि दुनिया की हर चीज पे वो ज्ञान दे सकते हैं। और मैं बार बार अपने दोस्तों से कहता हूं कि पता होना चाहिए कि किस चीज पे आपको नहीं पता है और किसमें किससे पूछना चाहिए, है ना। समझदारी से पूछ लो भाई, किसी से, समझदार इंसान से। मधुलिका ने तो फिर भी इस पे रिसर्च की है, मगर मुझे तो, हम जैसे लोगों को तो आपसे पूछना है। तो मैंने सोचा कि इसकी हम शुरुआत बिल्कुल कुछ इमीडिएट चीज से करेंगे और फिर थोड़ा सा विल ड्रॉ इट इनटू समवट डीपर. Madhu and I, we both thought that we'll begin with the corona COVID situation, and what it tells us something deeper. Then we go into the more somewhat immediate thing that's being pushed. ये जो environmental impact assessment को सरकार बदलने की कोशिश कर रही है, उसके जो notification है उसके बारे में, and then we get into deeper issues of climate change and so on. तो उस पे चलेंगे. So let me maybe Madhulika can also chip in with her question. My simple question is this. Is 2020 telling us something? देखिए क्या कुछ हो रहा है, पता नहीं, जैसे किसी ने डिजाइन करके कहा हो। उसी साल कोरोना वायरस, उसी साल बे ऑफ बंगाल में हर 10-20 साल में बड़ा आ ही जाता है। उसी साल अरेबियन सी से भी साइक्लोन आ रहा है और उसी साल लोकस्ट। तो सब कुछ मिला के जो साधारण लोगों की भाषा में कहें कि भाई ऊपर वाला कुछ हमें मैसेज दे रहा है क्या? Is there something special that 2020 is telling us, and what is the lesson? But maybe Madhu wants to add to that. Madhu? No, I just actually. We've lost. तो मैं जवाब दूं? Slightly extend the question that, for to keep the question of the environment at now it looks like it's come home. Do you think it's come home? Do you think people recognize the magnitude of the issues that we are confronted with? जी देखिए मधु और योगेंद्र, दो चीजें इसमें। एक तो देखिए, मैं बड़ी प्रैग्मेटिक और बिल्कुल साफ भाषा में ये कहना चाहूंगी कि आज जो आप देख रहे हैं वो आपके बहुत सालों की गलतियां और अंग्रेजी का जो शब्द है प्रोक्रेस्टिनेशन, कि आपने जो कुछ करना था आपने नहीं किया, उसका आज आप रिजल्ट देख रहे हैं। आपके सामने दो बड़े क्राइसिस सामने हैं। एक है पब्लिक हेल्थ का क्राइसिस, जिसका बिल्कुल सीधा सवाल जुड़ता है जिस तरह से हमने एक तरीके से अपना रिलेशनशिप नेचर से बनाया, खाने से बनाया। आज जो वायरसेस हैं वो जूनोटिक वायरसेस हैं, ये जूनोसिस है जो एनिमल से लेके ह्यूमन तक जंप कर रही हैं वायरसेस। तो ये म्यूटेशन जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो पर्यावरण के साथ जो अपना नाता था उसको पूरी तरह से तोड़ दिया। तो ये एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस का जो की रीजन है। आज कोरोना वायरस वही वायरस है जो सार्स की वायरस थी या इबोला की वायरस थी या HIV की वायरस थी। सब जूनोटिक डिजीजेस हैं और सब दो तरीके से। एक की आपने जंगल काट दिए, उसके कारण आपकी जो
जो वायरसेस जानवरों में रहती थी वो अब जानवर से हट के आज ह्यूमन तक पहुंच गई। आपने जानवर ऐसे खाने लगे जो वाइल्ड में थे, जो आपको कभी खाने नहीं चाहिए थे, तो आपके पास आ गई। तीसरी तरीके से जो आपने एक इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस शुरू किया, जहां पर आपने जानवर इतनी पूरी तरीके से पैक्ड कंडीशंस में रखने शुरू करे, उनको एंटीबायोटिक ठोक ठोक के ठोस ठोस के खिलाया, क्योंकि अगर बीमारी हो जाएगी तो फिर आपकी पूरा उद्योग खत्म हो जाएगा, उसमें फिर बीमारियां बढ़ी, उसके कारण भी ये वायरसेस ह्यूमंस तक पहुंच रही हैं। तो एक तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। Just a small intervention, Sunita. That's I'm getting requests from my colleagues from Tamil Nadu that they would want us to bit of English as well. So because all three of us are comfortable in English and in Hindi, so if we can do a bit of English as well, it's a special request because they are very keen to understand what you are saying. Yeah. नहीं, बिल्कुल योगेंद्र. I think we will do dual languages, and but I think it's important that our word and our language is one. Language is never important. It is something to explain. So the fact is, one, we have completely, what I've been saying, we have a dystopian relationship with nature, completely dystopian relationship with nature. And that is the result of what we are seeing with Corona. But we are also seeing the fact, and this is the deeper point of Corona, we are seeing years of neglect in public health systems that has come to plague us today. We are also seeing the fact that we have created such an inequitable, uninclusive society that you have large numbers of people who are more vulnerable today, both to the virus and to the loss of livelihoods because of the lockdown. So the crisis today of COVID is very much a result of what actions we have not taken and things that we have done for which we are paying today. The same thing comes with the cyclones. The fact is, you've had a cyclone in the Bay of Bengal 10 days ago. Yesterday, day before in Maharashtra. Next week, there's another cyclone coming to the coast of Odisha. And what is very clear is each year, and we have been tracking this, we have been monitoring this, each year, the intensity and the frequency of tropical cyclones is increasing. And also what is happening is what scientists call rapidification, which is कि जो तापमान है आपकी जमीन का और ओशन का वो बदलता जा रहा है. And because of the changes in this temperature, you are actually finding cyclones becoming less predictable and more intense. And Yogendra, this is something Madhu and you understand, and I cannot speak with enough anguish to say, a cyclone is not about the event, it is about the aftermath. It is about the fact it takes away the lives of people and the livelihoods of people. It takes away the development dividend. हम कितना भी कोस लें सरकार को, मगर कोई तो स्कूल बना होगा, कहीं ना कहीं तो पानी पहुंचा होगा, कहीं ना कहीं तो शौचालय बना होगा, वो सब खत्म हो जाता है. So you are really starting from scratch, and that really is what you are seeing today. So you are seeing, in my view, the revenge of nature. You are seeing today a message that Mother Nature wants to give us. Now, whether we listen to it or not is going to be the big question, because the arrogance of man, and here I will call it man and not woman, the arrogance of man is what we are, what at the head at which we are today. Absolutely. That's a larger civilizational question that we want to keep coming back to, keep focusing. जैसे अभी सुनीता बता रही थी, आफ्टरमाथ, बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आया, हम सब ने पिक्चर्स देखी, पिक्चर्स आई कलकत्ता से, पिक्चर्स आई कलकत्ता के एयरपोर्ट से. जो हमने नहीं देखा वो ये कि सुंदरबन के इलाके में क्या हुआ. इतना बड़ा इलाका, 45 लाख लोग वहां रहते हैं, और जब समुद्र का पानी अंदर आ जाता है और वो कैसे खेतों पे आ जाता है, एंड व्हाट डज दैट सैलाइन वाटर डू टू एग्रीकल्चर. और आने वाले 2-3 साल तक वहां एग्रीकल्चर नहीं होगी, काफी साल के लिए बहुत नुकसान हो रहा है. बट अब हमें, हमारे को सिर्फ दिखता है कुछ रूफ्स उड़ गए, वो हमें दिखाई देते हैं.
कुछ ह्यूमन लाइफ्स की जो लॉस होता है वो देखते हैं, हम गिनते हैं, अच्छा 15-20, अच्छा 100, दैट्स नॉट टू मच, इट्स ऑल राइट, वी वर काइंड ऑफ सेफ। बट व्हाट वी डोंट, आज मेरे पास सुबह किसी का मैसेज आया कि आप सब लोग सोच रहे हैं कि हाँ मुंबई में कुछ नहीं हुआ इसलिए साइक्लोन ने ज्यादा असर नहीं किया, आप रायगढ़ के अंदर आके देखिए, आप पूरे इलाकों में देखिए कि वहां पे क्या हो रहा है। So those are the issue of the larger issue of civilizational crisis of how we've dealt with nature, and that's a larger issue of policy that we wanted to focus upon. आपने 2-3 चीज लिस्ट की, you mentioned what we've done to public health, और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पिछले 2-4 महीनों से लोगों को सरकारी अस्पताल याद आ रहे हैं, लोगों को याद आ रहा है कि पीएचसी भी कोई चीज हुआ करती है। इससे पहले तो हम कह रहे थे कि भाई इंश्योरेंस करवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, और बस लोगों के पास इंश्योरेंस हो जाएगा, बाकी चीज व्हाई हैव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड सो ऑन। और अब पता लग रहा है मुसीबत के अंदर यही काम आ रहे हैं। Madhulika has done research for years on health policies as well, among other things. So if you wanted to add some reflection on the health policy before we go into the question of amendments to environmental impact assessment, ये जो notification भारत सरकार ने किया है, Madhulika? जी, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी, वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो इस पूरे डिस्कशन में जब पब्लिक हेल्थ की बात होती है, पब्लिक हेल्थ की बात तो होती है, तो एक तो व्यवस्था, the arrangements in hospitals, and we are talking about when the vaccine is going to come. But the one very important aspect of health which we have missed in the whole discussion is that there is, when there is a sickness that is coming and likely to affect everyone, once it affects, then you're talking about treatment and so on. But when it is impending, then the one big question that Corona has forced us to think about is immunity. And immunity building does not happen when sickness comes. Immunity building happens before. And the one focus on immunity building that is present in our medical knowledge system is, by that acronym called Ayush, but then there's a whole series and the whole range of medical knowledge systems that are available in this country. अब इस देश में जो ज्ञान व्यवस्था है स्वास्थ्य के बारे में, वहां पर इम्यूनिटी जो है, शरीर को किस तरह से आप ताकतवर बना सकते हैं ताकि वो बीमार ना पड़े, इस विषय पर हमें लगता था कि स्वास्थ्य का मतलब है कि आप अगर बीमार पड़े तब क्या करें, लेकिन बीमार पड़ने से पहले। और मैं इस सवाल को इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि इसका संपर्क एक्चुअली पर्यावरण के विषय से बहुत जुड़ा हुआ है कि जब हम ट्रेडिशनल मेडिकल नॉलेज सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं, these are mostly herbal based, also mineral based, and some animal part based medicine, and these are available throughout the country, and most people listening may be amazed to hear that actually 80% of people in this country still depend largely on traditional medical knowledge system. That discussion is a separate one. But if we are going to systematically destroy the very physical, natural environment in which we live, then we are going to lose that access to that medical knowledge. अगर पौधा ही नहीं रहेगा, तो आप पौधे से औषधि कहाँ से बनाएंगे आप? और वो औषधि केवल बीमारी के लिए नहीं, लेकिन आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए। So at this point, when immunity has become a very big issue in health, when people have suddenly need to see how that question of immunity. So if you would like to talk about that, Sunita, as well, that would be very interesting, I think, and important for us at this time. So just as we've discovered public hospitals, we've also discovered preventive and social medicine, which was always there. We never cared. But it's also about a very, I agree, Madhulika, very beautifully put what you said. But let's also remember one other very important part of prevention is the availability of clean water. Absolutely. Absolutely. And the fact of the matter is, I used to, when Corona started and everyone said, 20 second running water के नीचे हाथ रखो, exactly. हाथ धो, ये कैसे? अरे यार पानी तो होना चाहिए ना करने के लिए, So पानी के बिना how do you actually maintain immunity? And I think the environment, and you very beautifully have said that. I think the most important thing with environment always is
the issue of ensuring that you have prevention. And for prevention, you need access to sanitation, you need access to water, you need access to good housing, which is not one which creates the conditions in which diseases breed. So I think it's very important for us to make these linkages with Corona. The fact is today, whether it's Singapore, I mean, I was amazed, Singapore में यही होता था, अरे सिंगापुर तो इतना एडवांस नेशन है, सब लोग इतनी सफाई की ध्यान रखता है वहां तो कोरोना कभी नहीं रहेगा। वहां पर भी था, क्यों? क्योंकि वहां पर भी माइग्रेंट लेबर है, वहां पर भी वर्कर्स हैं, और किस कंडीशन में रहते हैं वो लोग आज पता चला है। ठीक है, हमारे से थोड़े बेहतर हैं, मगर इतने ज्यादा बेहतर नहीं है। तो आई थिंक ये एक सवाल निकल के आया प्रिवेंशन का। और आपकी बात जो बायोडाइवर्सिटी की है, एक सेकंड में जरा इसको जो बात आपकी बायोडाइवर्सिटी की है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि आज जो यूएन इन्वायरमेंट डे है, यूनेप ने कुछ नेचर रिस्पेक्ट नेचर या कुछ ऐसे कुछ शब्दों में इस डे को कहा है, मगर हमारे यहाँ every time we have talked about conservation, we have talked about exclusion. Absolutely. Okay, so if you talk about traditional herbs and traditional knowledge, the fact is today, if you want to grow that traditional herb, you will be not allowed because it would be classified as a forest product. Okay, or if the forest department will not allow you to grow it on their lands because it is seen as a minor forest produce. So I think it's very important for us as we discuss the new normal, Yogendra, because now the question also is the issue really about how are we going to build the post-COVID world. Okay, and as I keep saying, you have this incredible scene of the invisible have become visible in our lives. Okay, and you may have seen my colleague Vivek took that 500 kilometers. He walked with the migrants from Delhi to the villages, and the pathos, the anguish, the anger. At least for once we understand who these people are. But now there are two opportunities. I mean, I have been writing about migration for the last 1.5 years, because when I look at pollution in Delhi and I travel to the unorganized colonies in Delhi, I see appalling working conditions in which people live. I see pollution and I see labor where we have never ever provided for them. So today, two things, and I think this is what I would love to get both your opinion on, ideas that we are working on. We are saying, one, here is an opportunity. People have gone back. Can you actually think seriously about rebuilding local economies? And I'm serious about this. I know, however impossible it often seems, but I think we need to invest in hope. And we need to find directions for movement ahead. And I believe the question today of rebuilding local economies so that people don't have to leave. And in spite of the increasing vulnerability because of climate change, the locust attack linked to climate change, we still have to invest in local economies, local livelihood. But the larger question that comes out of this is, what will you do to the formal or the informal industrial economy of our cities and our the industrial economy? The fact is, we follow a globalization model in which we discount the cost of labor, we discount the cost of environment, which is why all countries of the world have outsourced their production to China. वहां क्या होता है, किसको क्या पता? एक प्रिजन लेबर से किसी को फर्क भी नहीं पड़ता, प्रिजन लेबर। मगर देखिए, उनने अपने लोगों के लिए हाउसिंग तो कर दी है, उनने अपने हाउसिंग लोगों को कुछ तो वेयर विदॉल दे दिया, उसके बाद क्या होता है कुछ पता नहीं। मगर आज ये सवाल है कि अगर हमारे पास दो रास्ते हैं, एक हम चाइना रूट जाएं, जो कोशिश में हैं लोग कि हम ज्यादा ब्राउन इकोनॉमी करें, हम इन्वायरमेंट को धक्का दें, उसको नकार दें, और दूसरी तरफ से हम ये भी सोचें कि हम लेबर राइट्स को नकार दें, जो आज हो रहा है, क्योंकि हमें चाइना से compete करना है। मगर एक दूसरा सवाल भी है जो मुझे लगता है एक बड़ा पॉइंट ऑफ होप है, जो हम अगर उसको थोड़ा बहुत हम काम कर सकें।
आज एक better bargaining power आ रही है in the workers of our country, where the value of the workers is being recognized. So can we actually create better conditions so that the cost of environment is paid, the cost of labor is paid? Now, if that is done, Yogendra, the cost of production will go up. Therefore, for once, we can think of moving out of a consumption-led economy to a production and well-being-led economy. Now, that's the ultimate answer for climate change. That's the ultimate solution for a better economic world order. So I think that's the conversation we need to have. What can make that happen? I mean, I may be a complete fool in this because I am old, and often it seems, why are you being so hopeful? But I think it's important for us to see where can we go from here, and how can we find new ways of building an inclusive future, because only if it's inclusive can it be sustainable. एब्सोल्युटली, आपने तो दिल की बात कर दी। इसी पिछले 1.5-2 महीने से मैं यही बात बार बार कह रहा हूँ, और मधुलिका से भी कई बार बात हुई है कि भाई मजदूर गांव में चला गया, ये ट्रेजेडी नहीं है, ये बहुत बड़ा मौका है। वो गांव में चला गया, वो आपकी खोली में जहां एक कमरे में 6 लोग रहते थे, और आप तो जानती हैं लोग घंटों के हिसाब से बेड शेयर करते हैं कि इस 8 घंटे तू सो लेना, बाकी 8 घंटे मैं आके सो लूंगा। उस कंडीशन से वो अपने घर वापस चला गया, जहां उसके पास 2-2.5 कमरे का एक मकान है, पीछे थोड़ा सा जगह है जहां वो सब्जी फल उगा सकता है, चाहे उसके पास जमीन नहीं भी है, और उसके पास बेहतर हवा है, शायद अच्छा पानी नहीं है लेकिन बेहतर हवा उसके पास है। तो उसे घसीट के वापस वही बंबई सूरत की खोली में लाना क्यों हमारा मॉडल हो? अब हम क्यों नहीं कह सकते कि जो पॉज लग गया है, पॉज के बाद आप दोबारा सोच सकते हैं कि किधर जाना है। तो क्यों हम ये जो रिवाइवल की बात आ रही है कि बस रिवाइव करो, किसी तरह से अब उस बंदे को गोरखपुर से दोबारा खींच के उसी अहमदाबाद के अंदर लेके आओ, उसी खोली में रहेगा, 1 कमरे के अंदर 10 लोग रहेंगे और वही वो काम करेगा, और उसमें से आधे काम ऐसे हैं जो एक्चुअली गांव में एग्जैक्टली वही का वही काम हो सकता है। अब चमड़े की फैक्ट्री क्यों कहीं बड़े शहर में लगे, वो चमड़े की फैक्ट्री क्यों मेरे गांव के नजदीक नहीं लग सकती? इसका कुछ पहले हुआ करता था कि भाई बिजली नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, इंटरनेट नहीं है। अब हिंदुस्तान के 90-95% गांव में मोटे तौर पे तीनों चीजें अवेलेबल हैं। हम क्यों नहीं एक नए तरीके के, अगर इंडस्ट्रीज चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, वो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग गांव में क्यों नहीं हो सकती? और आज जब हम इतने लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने को तैयार हैं इस बीमारी से बचने के लिए, तो हम वो लाखों करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल है। और ये जो, मैं तो इसको भी एक मौके के रूप में कहता हूं कि भाई ठीक है, आपके पास अगले 6 महीने के लिए इतनी बड़ी लेबर गांव के अंदर आके पहुंच गई है। उस लेबर के पास अभी करने को कुछ नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है गांव के अंदर, इमीडिएटली जाते ही तो काम मिल नहीं जाएगा। सो मैंने कहा है कि क्यों नहीं मनरेगा को हम क्लाइमेट चेंज से लिंक कर देते, और बजाय कि सिर्फ मनरेगा का काम करवाने के, हम इसको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज प्रिपरेशन मिशन बना दें। आपको उसके लिए, आप मुझसे बेहतर जानती हैं, आपको उसके लिए पानी के सोर्सेस के बारे में कुछ करना होगा, आपको पेड़ों के बारे में करना होगा, आपको जमीन लैंड की क्वालिटी के बारे में करना होगा। तीनों के लिए मजदूर चाहिए, मजदूर आपके पास पड़े हैं, इस वक्त खड़े हैं, और उन्हें किसी तरह का काम चाहिए। क्यों नहीं हम इसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदल देते? तालाब की जब बात आती है तो हम सब अनुपम मिश्र के बारे में सोचते हैं, और अगर पूरे देश में अगर तालाब, बावड़ी और इन सब को रिवाइव करने का एक बहुत मेजर प्रोग्राम हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो इस क्राइसिस को किसी तरह तो हम अपॉर्चुनिटी बदल सकते हैं। बट योगेंद्र, इसके बारे में बहुत, 2 चीजें मैं कहना चाहूंगी इसमें। एक, मधुलिका ने मुझे याद दिला दी अनिल की। अनिल मुझे लेके गए थे बहुत साल पहले महाराष्ट्र के मंत्रालय में, एक छोटे से ऑफिस में, वहां पर खूब सारे, मुझे आज भी बिल्कुल दृश्य मेरी आंखों के सामने है, बहुत सारे फाइल्स थे, छोटा सा कमरा, उसमें एक बड़े छोटे से आदमी बैठे थे। तो मैंने अनिल से पूछा, क्यों मुझे इतनी दूर लेके आए हो इनसे मिलाने के लिए? उनका नाम था VS पागे, और उनने EGS का प्रोग्राम शुरू किया था, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, 1972 में जब शुरू हुआ। मगर योगेंद्र, एक
जो हम भूल गए। EGS फिर बन गया आपका मनरेगा, नरेगा, फिर मनरेगा, वो सब बनते गए। मगर पागे ने जब शुरू किया था उसके दो बिल्कुल क्लियर लक्ष्य थे। एक था कि एक कॉम्पैक्ट था बिटवीन द विलेज एंड द सिटी, और उसमें ये था कि गांव के अंदर लोग काम रहेंगे, काम करेंगे, और शहर वाला उसके लिए पैसा देगा। जो EGS का पहला था उसके अंदर एक प्रोफेशनल टैक्स था जो every person in Mumbai paid, in the cities paid to for the well-being of the village. And the idea was exactly as you said at the time was, let us find work close to where people live. Since then, there has been, and Anil played a very big role in this, to say, no, let us use Manrega for ecological asset building. Exactly. Let it not be drought relief, but relief against drought. Exactly. And so government has invested. In fact, yesterday we have released data taking out from the government's own dashboard on Manrega, how many tanks, how many ponds have been created. So it is not as if it is not part of the design. However, and this is the missing link, the fact is a pond is only a hole in the ground. If you do not have the catchment secured, if you have not planned for who will maintain the pond. So we are back to the question of how to actually build again that democracy in the village and how to build governance. And here I want to remove, I mean, जब विवेक गांव में था पिछले हफ्ते और वहां से बता रहा था हमें, क्योंकि अब उसकी जो यात्रा है अब वो गांव पहुंच गया है, लोगों के साथ उनके गांव पहुंच गया है और वहां से समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या तुम्हें काम मिल रहा है कि नहीं, क्या मनरेगा काम कर रहा है कि नहीं, कि क्या हो रहा है। और उसके अंदर दो चीजें हमने जो पिछले 10-15 साल में बिल्कुल छोड़ दी कि क्या आज कितना खड़ूस और कितना खराब पॉलिटिसाइज लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हमने बना दिया है गांव का, करप्ट एंड पॉलिटिसाइज्ड। पॉलिटिक्स खराब चीज नहीं है, मगर उसका जो इस्तेमाल करने का तरीका है उसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। वो जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात होती थी, वो बात होती थी कि गांव को समृद्ध बनाओ, मगर उसके साथ जो वहां की समझ है और उनके लोगों के सामने सब बात रखो और फिर उसके अंदर से कोई एक निष्कर्ष निकालो। तो ये जो सवाल था, ये आज अगर हम और बिल्कुल गांव के अंदर इन्वेस्ट करने का एक बहुत बड़ा मौका है। कोई किसी को गांव से अगर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ें, चॉइस होनी चाहिए, मगर पुश नहीं होनी चाहिए। सो ये एक बहुत बड़ा मौका है, मगर इसके लिए जो फंडामेंटल्स हैं डेमोक्रेसी के, वो हमें फिर से तय करने पड़ेंगे और फिर से एक और चर्चा करनी पड़ेगी कि गांव के अंदर वो कैसे स्ट्रेंथन हो, जिससे अकाउंटेबिलिटी भी बढ़े, लोगों तक पैसा पहुंचे और काम ऐसा हो जिसका गांव का उसका इम्प्रूवमेंट हो सके, इकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो इन द विलेज। Absolutely. So you brought the conversation to the tri-junction of politics, economy, and ecology, which is exactly what we wanted to. And in fact, Madhulika's own work has been on this tri-junction for some time. So maybe she should just carry this a bit forward before I bring it back to the one question you mentioned, the brown route. I want to pose the question of the brown route versus the green route, because that's a big option we have today. Yes. And इस वक्त brown route के लिए push करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं. So we'll just come back to that before Madhulika picks up this thing, tri-junction of politics, economy, and ecology. Sunita, I just want to, refer to two things that you said. Number one, that you are hopeful, and maybe that's foolish because you're old. I want to completely disagree with that. And I think that this is the kind of hope that has driven so much of the environmental movement and all the kinds of efforts that you have made and so many thousands of others have made in this country. मैं जो एक बात कहना चाहती हूँ कि जब आज हम ये रिवाइवल की बात कर रहे हैं और आप और योगेंद्र जो दोनों बात कर रहे हैं रिवाइवल ऑफ द रूरल इकोनॉमी, एक बात जो हमें ध्यान रखना है, एक तो आपने बताया कि डिजाइन में है, सरकारें
सरकारों ने किया है काम, इसमें इन्वेस्ट किया है, लेकिन एक दूरदर्शी तरीके से इन्वेस्ट किया है, नॉट विद अ लॉन्ग टर्म विजन such that when you make a pond, you also create a whole infrastructure and systems around which that pond continues to be functional over a long period of time, and it feeds into the ecosystem of agriculture, animal husbandry, and all the other work that is done within a village. At the same time, Sunita, you know this better than I do because you travel so much in the country. Yogendra also encounters many of these people. That this country has seen a huge amount of work from below by people outside of government and outside of the state, outside of the market. And so many initiatives on the ground have been taken by people, either local people, to build ecologically defensible structures, to work on the forest, to save seeds, to create water management systems by themselves, all kinds of things. So there's, I mean, Down to Earth is a wonderful repository. आप लोग कितना रिपोर्ट करते हैं, और बाकी आप तो बहुत सारे वेबसाइट्स और ये सब बताते हैं, betterindia.com वगैरह, कि कहाँ से लोग कितना काम करते हैं जमीन पर लोकल इकोनॉमी को वायबल बनाने के लिए. To make local economies viable has been an effort, and we know of stories of how many people who leave jobs in the the frontier sectors of development. तो टेक्नोलॉजी अपना IT सेक्टर के जॉब्स और कॉर्पोरेट सेक्टर के जॉब्स छोड़ के लोग आते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, और उसके बाद वो कितना खूबसूरत काम करते हैं. So today when we are talking about revival of the Indian economy at the rural end, we are not having to start from ground zero. We have some design from the government that has already come in, and there's so much work put in by people themselves. So when you're talking about democracy, don't you think that we can actually rely on all those kinds of initiatives and give a huge boost to multiplying them so that people are aware? And the biggest problem in our country is people do things, at local level, other people don't know. So they cannot draw sustenance, excitement, encouragement from that. I think that's the task of politics. That politics should be, should come here. As you said, not all politics is bad, and I'm glad you're saying that to us at least. But if you say that, then this is the beautiful part work that politics can do, to acquaint people with the parameters of hope that people have set themselves, and wherever governments have done good work. So that's one thing. The second thing, since you're going to be talking about the brown route, I just have my small two-penny bit to add to this. First of all, I'm glad you mentioned informal economy, because that's a much larger sized economy. I mean, I belong to another group where Barbara Harris-White has made a presentation, and her beautiful work on informal economy, which shows us that that is actually the economy. But because all the attention of economic discussion is on the formal economy, and this whole revival is being discussed is only about the formal economy, which is about 15% of the economy. Correct me if I'm wrong. So, of course, this is very important. We need to work on it. First of all, we must remember that it is not the one that is completely driving our economy continuously. Number one. Second, it drives with lots of costs, as you said, environment costs, labor costs, etc. We are all becoming aware of that. So therefore, when we are talking about, even if we are talking about the revival of this economy, from the environmental position, the ecological position, the demand should be that now the focus should be on tweaking as systematically as possible those technologies that are being used in these economic enterprises, so that they inch at least slowly towards some kind of green production systems. I know that you and I both do not subscribe really to ideas of green capitalism and so on, but at least that's a start. At least they know that they have to start. And the very same brains and drive that created these technologies, which are wasteful, the same brains are going to find alternatives. I don't think that that's so difficult. So there's no need to panic so much. And there's so many alternatives available. We need to highlight those alternatives. Again, I think that is the task of politics. So both at the urban level, where the modern industry is, and at the rural level, where we need a revival, I think we have lots of options, lots of work. It is the task of politics to assert that these alternatives and options ought to be
taking center stage now in the post-COVID era. I think this is what we really need to do. I'd really like your comments on this, Sunita. तो दो चीजें हुई, एक तो रूरल एरियाज में और देश भर में किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, किस तरह के काम हुए हैं जिस पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, और जो दूसरा एस्पेक्ट है इंडस्ट्री वाला, उसमें बाद में हम आएंगे। उसमें तब मैं ये ग्रीन और ब्राउन वाली बात को थोड़ा और एम्फसाइज करना चाहता था, लेकिन पहले उस पे बस एक सवाल है, ये 8:30 बजे तक ही है ना, कितने बजे तक? मेरे ख्याल से थोड़ा हम आगे चल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं मेरे है। पास कुछ और भी है, मुझे कहीं और भी जाना है। जी जी जी। तो अगर बता दो कितना रखना चाहते हो तो उस पर थोड़ा लगाम, थोड़ा सा फिर 15 मिनट और कर लें। 15 मिनट, ठीक है, ठीक जी। ठीक। So sorry, मधु कह रही थी कि about the different experiments across India and how they can be used. I mean, I agree with that, Madhu. But I think, Madhu, it's time we moved out of experiments and pilots. We have to implement these things at scale. And for that, we have to seriously talk about how do we change the institutions of governance so that they can deliver. And I think that's absolutely critical for us to be able to do. And that's really where I think we are not spending enough, because we tend to be, most of us believe that सरकार से तो बात ही नहीं करनी है, सरकार से तो काम ही नहीं करना। अब at the end of the day, अगर आपको स्केल में मनरेगा के साथ काम करना है और उसके साथ कुछ सुधार लाना है, you can't do it through these experiments. ये experiments बहुत अच्छा है, बता देते हैं आपको कि क्या possibility है, क्या potential है, मगर उस potential वो इसीलिए होता है क्योंकि वहां पर कोई एक रिमार्केबल आदमी होता है, औरत होती है, जिसने उस चीज को आगे तक ले गए। अब जो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है, it must be designed for the ordinary, not for the extraordinary. Yeah. So you must be able to change your systems of governance so that every individual can actually perform and you get delivery. And I think that's where my own understanding is we are not spending enough time. And I'm sorry, my bugbear always is with academics कि वो अपनी दुनिया में रहते हैं, जो जमीन में हो रहा है उसका तो कुछ, there's no critique, there is no understanding, and discussions have become so polarized. So either you're for government or you're against government. And everything is seen from the point, no, I'm not talking about academics here, I'm talking about the larger societal discussions that happen. And as a result of it, what's happening is that you're beginning, if you have a critique of Manrega, it's seen from the lens of, are you for or against government? Then we will look at it. And there isn't enough examination of these issues on the ground. So I think that's critical for us to do more and more. I keep saying this is a development. There is a huge experiment in development happening in the country. And it's important for us to learn from it, constantly learn, and to be able to improve. Now, it's also, unfortunately, all governments are now becoming extremely intolerant. And that's nature of governance now across the world. I mean, I wrote yesterday that I would rather be a vulture than a cheerleader. And I think it's important for us to recognize the need for more credible, independent information. And we have to keep doing it. हमारा धर्म है, हमें तो अपना काम करना है. We have to put it out. दूसरी तरफ कोई सुने नहीं सुने, उसका उनका धर्म है, उनकी जिम्मेवारी है. मगर I think it's very important for us to take development to another level. And we have to understand how we must learn from the experiments, but not get lost in those experiments. No, certainly not. So now coming back to that larger question, which I've been trying to postpone, which is about, the state, bringing the state in. And I think we are at a very critical point. It's almost a fork where the decisions we are going to take in the next few months could actually determine the course of things for the next few years now. और जो मुझे लग रहा है, Sunita, correct me if I'm wrong, पहली बार पिछले बहुत सालों में, 10-20 साल में पहली बार अब बिल्कुल नेकेड ग्रोथ स्टेट को पुश करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें मुझे ऐसा लगा कि
दो चीजें, एक तो ये कि लेबर लॉज डोंट मैटर और दूसरा एनवायरनमेंट डजंट मैटर। दोनों को भाड़ में डालो, अब क्राइसिस है, किसी तरह से रिवाइव करना है। और ये जो लेबर लॉज को खत्म करने की जो कोशिश हुई है इस कोरोना का फायदा उठा के, उससे मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल ही कुछ एक नई डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं। और यही वो एनवायरनमेंट वाला जो नोटिफिकेशन आया जिसके बारे में अभी तो फिलहाल रुक गया है, फाइनल वो नहीं हुआ है, वो तो क्या ऐसी कोशिश आपको लगती है कि एनवायरनमेंट के इश्यूज को इस क्रिटिकल स्टेज पे, अब जबकि ये बहाना सबके हाथ में आ जाएगा, भाई कोरोना है, इकोनॉमी को रिवाइव करना है, अब ये बेकार की बातें मत करो, अब एनवायरनमेंट की बात मत बोलो, अब लेबर लॉज की मत बोलो, छोड़ो, अब फटाफट इसको रिवाइव करो। Are we seeing a big push for that? And if so, how do we counter that? A very good question. But Yogendra, I don't think it's so black and white. And I think we need to understand. Let's be clear. The whole world today is in desperation to move, to open. Okay. Our economy definitely is in shambles today. Livelihoods are in big trouble today. We have to rebuild the economy. Now, from the US, which is clearly not the example that we can hold, there is a desperation on one hand to say, yes, let's do whatever China does to be able to compete with it. That's where the labor laws came in. That's where every effort could be made to also derail environmental regulations. But I think there is a little more complicated story as far as environment is concerned. Not labor, but environment. I am not a fan of the current EIA notification. Okay? I believe it is a highly corrupt system that we have of EIA today. And let's be very clear about this, Yogendra. And as I'm speaking to your group, I will say it openly and clearly. Please be very clear, whether it was UPA or NDA, the track record is no different on the clearance. And the person who was in the chair, Jairam Ramesh, cleared maximum projects when he was the environment minister. So please don't give me this, that nahi, NDA, UPA, sab karte hain, wohi karte hain. And aaj sawal ye ho gaya hai, as far as the EIA notification framework is concerned, कि प्रोजेक्ट तो क्लियर होगा, मगर क्योंकि ऊपर से थोड़ी स्क्रूटनी है और बाहर से थोड़ी स्क्रूटनी है, तो वो फेसलेस कमिटी अंदर बैठती है और वो प्रोजेक्ट को थोड़ा घसीट देती है। तो अगर थोड़े प्रोजेक्ट में थोड़ा सा कोई सवाल है तो उसको थोड़ा 6 महीने घसीट दो, 6 मीटिंग कर दो, 2 मीटिंग नहीं 6 महीने मीटिंग कर दो, और 6 मीटिंग के बाद क्लियर तो होता ही है। और क्लियर होने के टाइम उसके अंदर एक लिस्ट ऑफ कंडीशंस बन जाती हैं। कौन वो कंडीशन देखता है कि वो कंडीशन लागू हुई कि नहीं हुई, इंप्लीमेंट हुई कि नहीं हुई? कोई नहीं, इंस्टीट्यूशन ही नहीं है देखने के लिए। सो द सिस्टम इज करप्ट, रॉटन, एक्सपर्ट ड्रिवन, faceless people who sit inside committee rooms who don't want accountability, and consultants. I am not in support of that notification. So yes, the government wants to modify it, and yes, they want to dilute it, but the system is so rotten. What are we defending? Should we not be standing differently and saying we want a different system rather than wanting to defend the indefensible? But क्योंकि हम इतना डरते हैं कि अगर हमने कुछ कह दिया इसके बारे में, EIA के बारे में, तो सरकार तो हटा ही देगी। एंड कहीं ना कहीं वो वेस्टेड इंटरेस्ट जो बन जाता है कि कोर्ट्स का वेस्टेड इंटरेस्ट, कि वो कंसल्टेंट का वेस्टेड इंटरेस्ट, सब लोग उसमें जुड़ जाते हैं कि नहीं EIA तो बचा के रखो। अरे EIA बचा के क्यों रख रहे हो योगेंद्र? आप मुझे एक चीज बता दीजिए, कौन सा प्रोजेक्ट रुका है EIA के कारण? कौन सा प्रोजेक्ट सुधरा है EIA के कारण? कहाँ पब्लिक हियरिंग की बात सुनी है किसी की? ठीक है, उसका आप 30 दिन से 10 दिन कर रहे हैं, कर ले भाई, वैसे भी सुनते कहाँ है? तो I think it's important for us to have a better discussion on this. And unfortunately, this is what I was saying to Madhu, we have got into these traps where we don't want to read, we don't want to discuss, we don't want to go in depth, we have just taken positions. It's a convenient position. EIA notification बदल रहे हैं, देखिए सरकार तो तय है कि डेवलपमेंट हो, environment नहीं हो।
अरे वो EIA नोटिफिकेशन में है क्या भाई जो आप बचा रहे हैं उसको? आप मुझे एक प्रोजेक्ट बता दीजिए जो सुधरा है उसके कारण। उसके बाद कोर्ट जाता है, NGT में बड़े बड़े लॉयर्स खड़े हो जाते हैं। तो आई थिंक थोड़ी सी जरूर, मैं इसको ये नहीं कह रही हूँ that the government is not desperate to ground the economy. There will be desperation. But your bigger question was, how do we stop it? And I think the bigger, therefore, the answer and the challenge is we have to find smart answers so that, and we have to believe in what I believe in, the not in my backyard of the poor, not the rich. आज अगर पर्यावरण बचा हुआ है तो इसलिए बचा हुआ है क्योंकि निम्बी हो रहा है इस देश के अंदर, नॉट इन माय बैकयार्ड. बट वो बैकयार्ड पहली दफे द पुअर आर रेजिंग देयर वॉइस एंड सेइंग नॉट इन माय बैकयार्ड विल यू बिल्ड दिस प्रोजेक्ट, नॉट इन माय बैकयार्ड डू आई वांट पोल्यूशन. That is basically changing the equations for the first time, because you are getting now to understand how do you actually do anything when till now every time we wanted to clear our backyard, we moved the problem to somebody else. अगर आपके यहाँ इंसिनरेटर नहीं चाहिए तो आपने तो कहीं और लगा दिया ना. पहली दफे मिडिल क्लास कॉलोनी के पास इंसिनरेटर लगा इस देश के अंदर, सरिता बिहार. पहली दफे आपने इंसिनरेटर का नाम भी सुना है. ठीक है, आज तक वो इंसिनरेटर्स लगते हैं और लग रहे हैं और आज भी लग रहे हैं, मगर वो गरीब के कॉलोनी में लग रहे थे. अगर वहां से आवाज उठेगी तो थिंग्स विल चेंज. सो दैट्स वन. Second, I think we need to find smart answers. I mean, we have put forward an agenda today on how to clean up Delhi's air or India's air. And we have suggested certain things which are all in the realm of doable, but they could make huge transformation. One, we have said we have a BS6 fuel and technology. Can you not use that to actually scrap trucks, pay truck owners, give a financial package to truck owners? It'll improve the automobile industry. It'll give truck owners money. And actually, it's a 90% improvement between this new generation of trucks to BS4, 90%. Achha. You're really talking about massive improvement in technology and reduction in pollution. फिर हम कह रहे हैं आप गैस को GST में क्यों नहीं ले आते? अगर आप GST में गैस को लाएंगे तो गैस can compete with coal. आज कोल हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं through OGL. Take coal out of OGL, okay, and put and give priority to gas. The reason we cannot take the tax of gas is because 2 states in India benefit from the double taxation on gas, Maharashtra and Gujarat. Now you can well understand why therefore putting gas into GST would become an issue. However, it could mean massive transformation, clean transformation that you could have. We've also said put a financial package into investment into augmenting public transport in our cities. Absolutely. So don't invest in cars, invest in buses, trams. क्योंकि अब ये भी निकल के आया है कि अगर आप लेबर चाहते हैं तो आपको उनको यातायात भी देना पड़ेगा एक से दूसरी जगह जाने के लिए. तो I think to some extent, and I'm not making light of this. I'm in the field. I know how difficult it is today for us to even make our voice heard. Okay. And that we can talk about the blue skies that we have seen. We can talk about the pleasure of hearing the birds. We can talk about the Himalayas that we could see because the air was clean, our lungs were clear. We can talk about that. But there is a desperation to go back to the normal. And the normal is dirty normal. But this is where we have to challenge it. We have to be there. We may not win. But we have to be able to say that we have to do things differently. But I am not willing to put all these into boxes. Therefore, the EIA notification to me is the least of my problems. I have many other issues that I would like to take on a fight with the government. It's interesting that you talk about EIA the way you do, because, in a sense, I've been making almost parallel argument for the labor laws. मैं खुद कह रहा हूँ काफी टाइम से कि इन पुराने लेबर लॉज को मैं डिफेंड नहीं करना चाहता. Exactly. क्योंकि हमने कुछ ऐसा बनाया है सुनीता, चाहे वो लेबर लॉज हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस लॉज हो, चाहे वो औरतों के बारे में कानून, रेप के कानून हो, कानून तो हम ऐसे बना देते हैं, पता नहीं दुनिया में कहां से इतने ऊंचे आसमान में कानून को पहुंचा देते हैं.
और इम्प्लीमेंटेशन उसका बिल्कुल जमीन पे भी मतलब जीरो भी नहीं इम्प्लीमेंटेशन होता। फिर हम कानून को देख देख के तालियां बजाते रहते हैं और उस कानून को आप थोड़ा सा भी बदलें तो हम बहुत चिल्लाते हैं, और हमारा फोकस इस पे नहीं होता कि भाई इम्प्लीमेंटेशन को आप 10% कर दो, उसको 20% कर दो, उसको 25% तो कर दो, कुछ भी इसके बारे में। तो मैं लेबर लॉज के बारे में एक्चुअली हमेशा कह रहा हूँ काफी समय से कि लेबर लॉ में चेंजेस होने चाहिए, उसकी ब्यूरोक्रेसीज खत्म होनी चाहिए, लेबर इंस्पेक्टर का राज डिसमेंटल करना चाहिए, लेकिन उसे करने का ये तरीका नहीं है कि आप रातों रात कह दो कि लेबर लॉज ही खत्म हो गए देश के अंदर, यू डोंट नीड एनी लेबर लॉज फॉर द नेक्स्ट 6 months, यू डोंट नीड इट फॉर नेक्स्ट 3 years, दैट्स नॉट द वे। सो आई थिंक हमारी तरफ से, हम सब लोगों की तरफ से जो इकोलॉजी की बात करते हैं और इक्विटी की बात करते हैं, मुझे बहुत लगता है कि हम कई बार बहुत लेजी होते हैं। एक बने बनाए फॉर्मूले हमारे पास कुछ 50-100 साल से चले आ रहे हैं और उसको बस इंप्लीमेंट करते रहो। कोई नई चीज लाने से हर एक को डर लगता है दुनिया में, हर किसी को नई चीज से, लेकिन ये वो वक्त है, दिस इज द मोमेंट टू थिंक न्यू, this is the moment to come up with smart solutions. This is the moment to say, okay, pause is, I mean, we did not design this pause, but this pause is an opportunity to think afresh, not merely against the standard things which we all love to hate, but also think afresh our own formulations. जो इतने सालों से हमने जो सेट फॉर्मुलेशंस बना रखे हैं। तो इनफैक्ट आपने जो कहा मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि हमें कुछ ऐसी चीजों पे फ्रेश सोचना चाहिए। नहीं सोचेंगे तो बिल्कुल एक रट में हम लोगों की सबकी सोच आ रही है। मुझे पता है आपको जाना है, सो आई डोंट वांट टू होल्ड यू फॉर वेरी लॉन्ग, वी ऑलरेडी हैड यू 10 minutes मोर, सो थैंक यू सुनीता जी। आई जस्ट वांटेड टू से, हमारे ही साथियों ने, यूथ फॉर स्वराज के साथियों ने याद दिलाया है कि भाई आप सिर्फ हमें क्रेडिट मत दीजिए, ये 9 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके किया है, दिस वुड डिलाइट यू नो मेक अस सो हैप्पी कि ये 9 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मोस्टली यंग लोगों की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो दिस इज अपार्ट फ्रॉम यूथ फॉर स्वराज, दिस इज लेट्स लेट इंडिया ब्रीथ, आरए कंजर्वेशन ग्रुप, म्यूज फाउंडेशन, NAPM, फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया, मंथन अध्ययन केंद्र, Let's Save Delhi, Dibang Valley Movement, and one more organization, हिमधारा। इन सब ने आज सोचा कि इसको सिर्फ करने का मतलब वो नहीं जो स्कूल कॉलेज में यूजुअल फंक्शन हो जाते हैं ना, एक थोड़ा सा कुछ कह दिया नेचर के बारे में। मधु आपके आने से पहले कह रही थी कि कैसे हम कितना फ्रिवलस तरीके से इसको मार्क करते हैं इस दिन को। तो हमारे दोस्तों ने सोचा कि इस फ्रिवलस तरीके से हम मार्क नहीं करेंगे, हम इसमें कुछ सब्सटेंटिव बात करेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि एक जब फर्क जो हुआ है, आपने अपने आप को ओल्ड बताते हुए मुझे और मधुलिका को भी ओल्ड बता दिया तो मगर हम ओल्ड लोगों में और यंग लोगों में एक फर्क आया है। आई एक्चुअली सी मच शार्पर अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज अमंग इन द यंगर जनरेशन। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये यंग साथी हमारे पीछे 20 दिन से पड़े हुए थे कि 5th को हमें कुछ स्पेशल करना है, और एंड आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट दे डिसाइडेड कि ये ओल्डीज तो कुछ नहीं करेंगे, इनको गोली मारो, and they decided and planned their program and just told me कि आपको 7:30 बजे आना है, आप वहाँ पहुँच जाना, you know. So I think that's really a very good sign. So maybe we should you know, wind it up around this, and because Madhulika keeps dealing with the young, maybe she wants to say something before we conclude. Well, I do deal with the young, but as Sunita said, academics live in their ivory towers, and probably what we have to say may not be terribly relevant. Madhu, you're misunderstanding me. That's not what I'm saying. That is not what I meant at all, and it's nothing to do with you. Okay, you're the least of my academic type people. Okay, you're the most rooted person in the world I know. Okay. No. I didn't. No, I want to also sort of make clear that we really should know, But the one thing that I do feel, Sunita, is that the awareness that young people have and what they can actually do with it, which is bordering on the political. All these groups that Yogendra talked about, and Youth for Swaraj, all of these people. I think we really need to create a space where the young people I see day in and day out, and I teach 250 people at a time in my classrooms, I see a hunger in them.
and a real desire to be part of the solution and not just understand the problem. And they tell me all the time कि मैम समझ तो आ गया, we've understood कि problem क्या है, अब ये बताइए कि करे क्या. And I think that this is where we need to play a very important role. And in that, I'm glad you brought this up because I think that we need to link the academic space with the space on the ground in a very systematic way. And these organizations can play that role because what they understand from us and then the energy they have and the commitment and the wonderful idealism that young people have. I don't know what people keep complaining about that, young people these days are only interested in careers and packages. I don't know which young. These are not the people I meet. I meet some wonderfully energetic and very committed young idealist people. And I think that this is where we need to create actually a self-conscious link. Of course, your organization is a wonderful space where lots of young people go and get trained and then they go and work in the field and so on. We need to replicate these many fold so that we have this systematic processing from the university to the ground. And the one thing that I really feel that they can begin with where they live. So that itself is also the ground. One of my teachers used to say that where you stand, where you live, and the stand that you take where you do, that is your politics. So I think that issues of the environment really enable us to do that. And someone needs to show that way. And political parties like Yogendra need to understand that this has to be part of their political agenda. The difficulty is that they don't see it as political enough. And I want to say this very clearly, in public, that political parties like these who are talking about an alternative agenda, they need to learn from people like you, Sunita, as to what is it that they can incorporate in the work of their young people and which that they can transform, carry into the larger political process. Absolutely. So that's probably a very good note to conclude this. Sunita, I normally don't do that, but I actually wanted to thank you. Thank you for keeping the vigil all these years when this was not a fashionable thing to do, when no one in the world cared. And Sunita, also for disagreeing with us. What I see in the movement sector and everywhere, there's so much conformism. एक बार कह दिया चीज निकल गई. No one has the courage to say नहीं गलत बात है. What I disagree. I'm grateful that you disagree because to show which is why I have so much respect for both of you. Which is why I'm so comfortable being here, saying all this, because I know that that we basically are people who believe that we need to be able to see it as it is, and that's it. That's important. Of course. Politics, a good politics, as Gandhiji would have told us, has to be built on the foundations of truth. You cannot lie to yourself and hope to build good politics. We have to be truthful. These are very difficult times for the country, but we have seen most difficult times are also the greatest of opportunities. So as Madhulika reminds us, this has to be our politics, and we have to think of a new political agenda. We'll come back to you, Sunita, and before I do, my young colleagues will get back to you. Definitely. And let's use this occasion to say, we are the solution. Governments hain, parties hain, but kitna unko gali denge? Don't want to spend too much time doing that. We have to do something, and this is the moment to launch a national movement. Thank you for showing us the way. Thank you, and thank you to all these 10 organizations which have done this. From 9 in the morning, they have been focusing on environment, have been talking, people have been listening. So all those who've been listening, आप सब लोग जो सुबह से सुन रहे हैं, जो सेशंस आपने देखे, आपने बहुत बड़ी चीजें इस देश के बारे में सुनी हैं और एक बहुत बड़े सवाल पे सुना है. तो ये अब ये एक एनवायरनमेंट डे सिर्फ ना हो जाए, जैसा हिंदी दिवस का होता है. इस देश में एक हिंदी दिवस होता है, जिसका मतलब है 364 दिन अंग्रेजी दिवस होते हैं. So this should not be the case. This becomes our opening point to think, reflect, and as Madhulika reminds us, act. Thank you very much. That's where we conclude. Thanks, Sunita, and thank you, Madhulika, for joining. Lovely conversation. बहुत अच्छा लगा आप सब आए. सबको बहुत शुक्रिया.